Hello everyone, myself Arvinda and I hope you doing well in your study. So now in previous class we have to discuss the chapter current electricity. Today we have to also discuss current electricity in lecture 2. So first of all we have to define in previous lecture review. So first of all, we know that what do you mean by the electric current. So we have to discuss about the current electricity. In previous lecture, we have to discuss about what current electricity. So current electricity is the branch of physics in which we study the charge or electron is at rest. It's called current electricity. What do you mean by the current electricity? The branch of physics in which we deals with the charge or electron is at rest. Okay. So next term is we have to define electric current. So what do you mean by the electric current? We have to define about electric current. So electric current is the rate of flow of charge through any cross section of conductor. What do you mean by the electric current? So electric current is the rate of flow of charge through any cross section of conductor. That is I is equal to Q by T. I equal to what? I equal to Q by T. So this is called as rate of flow of charge through any cross section of conductor is called as electric current. And unit of electric current is, so when we deal with the unit of electric current, अगर हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो करंट I is equal to what is the unit of charge? Unit of charge is coulomb. And unit of time is second. So it is coulomb per second or called as ampere. Ampere is the unit of current represented by A. Clear hai? Okay. Now, if you have to given that charge flows through a wire in time delta t, delta q is the charge E. If you have to given in the question, delta q is the amount of charge flows through the wire in time delta t. Delta q is the charge flowing through the wire in time interval delta t. Then in that case, we have to calculate average value of current, and average value is what? Delta q divided by delta t. This is the average value of current. And delta q can be written as q final minus q initial. This will be q final minus q initial divided by t final by t initial or t2 minus t1. We write it as t final minus t initial or t2 minus t1. This will be the average value of current flowing through the wire in time delta t. If you have to calculate the instantaneous value of current, so we can calculate the instantaneous value of current. So concept number 3 is, if this will be 2, if we have to calculate the instantaneous value of current. So instantaneous value of current. So the instantaneous current is the rate of flow of charge. What is rate of flow of charge is through any cross section of conductor is called what? Instantaneous current. And the value of instantaneous current is given by I is equal to limit delta t tends to 0. I equal to limit delta t tends to 0 and delta q by delta t. This will be delta q divided by delta t. This will be the instantaneous value of current. And when we remove here the limit, so we get I is equal to what? I equal to dq by dt. This is the instantaneous value of current. If charge is given to you as a function of time, then we have to calculate the value of current I equal to dq upon dt. क्लियर है इतना? फिर आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैसी क्वांटिटी है?
So electric current is a scalar quantity. But why it is scalar? And also possess direction. Current is a scalar quantity while it possesses the direction. Because we have to consider that a current carrying wire carrying current like this. This will be the current I, or this will be the current I. Yeah, we can say it is 5 ampere. Okay, and this will be the current is of 2 ampere. So अगर आपसे पूछें कि बताओ भाई ये थर्ड ब्रांच में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दिस ब्रांच, सो सिंपली दिस इज 5, तो 2 इधर चला गया इस वाली रीजन में, तो रिमेनिंग करंट इज 3 एम्पियर. सिंपली वी हैव टू simple 5 minus 2 is equal to 3. That is we applied the ordinary law of algebra. We not applied the vector law of algebra. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता देन आपको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये एंगल थीटा भी कैलकुलेट करना होता और फाइनल फॉर्मूला लगाना होता आई इक्वल टू रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कॉस थीटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला. बट ऐसा नहीं किया हमने. इसमें क्या किया, सिंपल करंट को कैलकुलेट कर लिया. 5 2 इधर गया तो रिमेनिंग करंट इज 3 एम्पियर. दैट्स व्हाई इट फॉलो द नॉर्मली लॉ ऑफ अलजेब्रा. सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. And conduction of current will take place. Second part is conduction of current will take place in different material. So conduction of current in different material. So we can say here conduction of current in different material. Conduction of current in different material. So first of all, we have to say that different material. थोड़ा राइटिंग का भी एडजस्ट करना, जब तक व्हाइट बोर्ड एक दो दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा. तो कंडक्शन ऑफ करंट इन डिफरेंट मटेरियल. So first of all, we have to say that the current conduction will take place in conductors. What? Conductors. Due to motion of free electron. Conductors में जो current conduction है in conductor, it will take place due to motion of free electrons. Okay, so this will be the conduction responsible for current conduction in conductors. Second part is in semiconductor. If we have to say that what is the conduction will take place in semiconductors. So in semiconductors, current conduction will take place due to electron as well as hole. So conduction is electron and holes. Holes is what? Holes is a effective positive charge carrier present in semiconductors. Next one part is in electrolyte. Conduction in electrolyte. What quantities are responsible? Electrolyte. So in electrolyte, conduction will take place. Electrolytes conduction will take place due to positive and negative ions. Due to positive as well as नेगेटिव आयंस. दैट इज इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे एक फेमस एग्जांपल लेते हैं H2SO4. जब H2SO4 का डिसोसिएशन होगा तो इट गिव्स 2H प्लस आइन प्लस इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स 2H प्लस आइन, 2H प्लस आइन प्लस SO4 नेगेटिव आइन. So 2H plus ion SO4 di-negative ion. And in this condition, 2H plus ion will move on cathode. 2H plus ion move on cathode. And SO4 di-negative ion move in anode. That's why due to motion of the charge carrier on cathode and anode, conduction will take place in electrolyte. Clear है? And अगर आपसे ऐसे पूछे क्वेश्चन में कि what is the direction of current, so we have to calculate the direction of current in current carrying conductor. This will be the current carrying conductor carrying current I. So the direction of current is always taken along the direction of flow of positive charge. जैसे आपने यहाँ पे एक ये कंडक्टर डिजाइन किया और इस कंडक्टर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दी. अ सेल हैविंग ईएमएफ ई और इट हैविंग द वोल्टेज V. एक आपने ये सेल कनेक्ट की है और सेल का वोल्टेज आपको कितना है, कितना गिवन है, V वोल्ट की सेल है आपके पास में. दिस इज द V वोल्टेज सेल.
plus minus. Okay, so when this cell, when potential difference is applied across the conductor, then the free electrons present in conductor repel from this negative terminal of this battery, and they move from negative end to positive end, and that is motion of electron will take place in opposite direction to flow of positive charge. तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो करंट की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं. सो द डायरेक्शन ऑफ, that is, direction of current will take place along the opposite direction of flow of electrons, opposite to flow of electrons, or we can say that along the direction of flow of positive charge. This is the direction of current. And what amount of number of free electron present in conductor per unit volume? So it is 10 to the power 28. The number of free electron per unit volume present in conductor is of 10 to the power 28 per meter cube. This is the amount of free electrons present per unit volume of the conductor. So due to this free electron, current conduction will take place in conductor. अब क्या होगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से न्यूट्रलाइज होगा, एट द सेम टाइम ये बैटरी क्या करेगी, एक और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी सर्किट में. ठीक है, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा तो एक लीव करेगा. तो द अमाउंट ऑफ number of free electron entering per second at one end of the conductor is equal to the number of free electron entering per second at other end of the conductor. That's why whenever the current is flowing in the conductor, so it remains uncharged. ये uncharged क्यों है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर जाएगा, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम. पॉजिटिव आइन, इफेक्टिव पॉजिटिव आइन का मोशन ऐसे ये वाइब्रेशन करते 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 यहाँ से बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. अब एक टर्म और आपको समझना है यहाँ पे कि वी हैव टू टेकन अ कंडक्टर हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ पर एक आपने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये डिफरेंट है. इट विल दिस टाइप ऑफ कंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बिकम A1. ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वाले एंड पर, ये डिफरेंट डिफरेंट एंड्स हो गए. दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस विल बी A3. तो हम ऐसा जानेंगे कि जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर लिखेंगे तो A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1. बट what is the amount of current in this conductor? So we can say that it is I1 is equal to I2 is equal to I3. That is the amount of current remains same for different area of cross section of conductor. Area of cross section of conductor के कारण करंट के पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, करंट रिमेन सेम. क्लियर है क्या? फिर देखो एक और कंसेप्ट इसमें छोटा सा सीखते हैं हम. इफ यू हैव टू गिवन करंट टाइम ग्राफ, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है यहाँ पे करंट टाइम ग्राफ गिवन है. ठीक है, तो ये आपने करंट टाइम ग्राफ के लिए हमने एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ किया. दिस विल बी द एक्स वाई एक्सिस एंड वी हैव टू ड्रॉ द करंट टाइम ग्राफ इन दिस एक्सिस. करंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस. आपको एक करंट टाइम ग्राफ यहाँ पे, दिस विल बी द वाई एक्सिस and this will be your x-axis. So here we have to taken current on the y-axis I and time is taken on the x-axis t and the graph is like this. ये इस टाइप का हमने एक इंस्टेंटेनियस ग्राफ ड्रॉ किया है करंट वर्सेस टाइम में. दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस ग्राफ. ओके, थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ करते हैं इसको ग्राफ को. तो अगर आप यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये हमने कर्व ड्रॉ किया है लाइक दिस. एक मिनट. सो द ग्राफ बिटवीन current and time like is like this. This will be the graph between current and time. ऐसे like this curve type graph. And this will be the segment having time t1 and this will be the segment having time t2. एक segment आपने ये लिया है और यहाँ पे this will be the time t1 and this will be the time t2. So what is the area of graph? So we can say that here area of IT graph is equal to
So we can say that here what area of IT graph, area of current time graph. IT graph represents charge. Area of IT graph is represent what? Charge. Flow in conductor. Area of IT graph equal to charge flow in conductor. Charge flow in conductor. चार्ज फ्लो इन कंडक्टर हमेशा याद रखिए जो एरिया आएगा इट रिप्रेजेंट द चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सो वी हैव टू टेकन अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन दिस ग्राफ सॉरी we have to taken a small element on this graph and the element is so very small so very small ठीक है ये एक एलिमेंट लिए है आपने एंड दिस एलिमेंट इज सो वेरी स्मॉल ये बहुत छोटा एलिमेंट है हैविंग थिकनेस dt so what is the charge through this small segment so amount of charge in this small segment is q is equal to or dq is equal to I dt this is the amount of charge flows through this small segment dq equal to I dt if we have to calculate the total amount of charge so total amount of charge q is equal to integration of dq and we have to take a limit from T1 to T2. This will be the charge flow in a conductor. Or either we write it is integration of what is dq I dt integration of I dt and this will be limit T1 to T2. So this will be the charge or we can also say that it is equal to area of IT graph. This will be equal to area of IT graph. Area of current time graph. Current time graph का जो area है it represent the charge flow through the conductor. बट कई बार आपसे ऐसे एवरेज वैल्यू पूछ लें इसमें कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आईटी ग्राफ देके इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सो व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज दिस विल बी आई एवरेज को आपने क्या लिखा था डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय delta t this will be the average value of current and what will be the delta q so delta q can be calculated as integration of t1 to t2 integration of t1 to t2 and this will be I dt ठीक है this will be I dt ये q कैलकुलेट किया एंड टाइम को आप क्या लिख सकते हैं d d डेल्टा t को तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या what is dt integration of dt and limit is again t1 to t2 so this will be the average value of current from the graph or we can say that it is equal to this will be equal to what area of IT graph this will be equal to what area of IT graph area of IT graph divided by time interval. This will be the formula divided by time interval. This will be the formula of average current. Clear है क्या? Clear है इतना? Now we have to discuss a question on the given concept. So first question is 10 to the power 6 electrons are moving through area 10 to the power 2 centimeter square. Then you have to calculate the current associated with it. So the answer is I is equal to Q by T. I is equal to what? We know that I is equal to Q upon T. And what is I? Q? Q is Ne by principle of quantization. So this will be Ne by T. And you have to give in the value N by T. Number of electron per second. So this will be N by T. And N by T is 10 to the power 6 electron per second. 10 to the power 6 electrons per second. So we have to put the value of N by T and N by T is 10 to the power 6. And what is the value of E? Is the charge of electron and charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. On simplifying the term we get इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो 10 टू द पावर 6 से आप इसको कैंसिल करोगे सो इट विल बी 10 टू द पावर व्हाट माइनस 13
10 to the power minus 13. So the value of current is what? I is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 ampere. This will be the value of current flowing through this, है ना? And current is not depend on the area of cross section, so इस टर्म का कोई भी यूज नहीं आएगा आपके इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, एक बार ट्राई करते हैं। 10 to the power 4 10,000 अल्फा पार्टिकल पर मिनट, दैट इज अगेन आपको क्या गिवन है? n बाय टी। n बाय टी गिवन है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर मिनट गिवन है, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर मिनट है, दिस विल बी 10,000 पर मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। नाउ you have to calculate again current associated in this tube. So current is I is equal to what? Q by T. And we know that what is Q? Q is what? NE by T. So it will be NE divided by T. And again you have to given the value of N by T. तो आपको फिर से किसकी वैल्यू गिवन है? इस N by T की वैल्यू आपको गिवन है। एंड अगर आपको N by T की वैल्यू गिवन है, so this will be 10,000, it will be 10,000 by 60. This will be N by T into charge of electron, and charge of electron is what? 1.6 into 10 raised to the power minus 19। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट दिस विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा आपका टर्म, है ना? एंड 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 16 by 6 into 10 raised to the power 16 by 6 into 10 raised to the power minus 17। ओके, 10 raised to the power minus 17, और अभी आप डिवाइड देंगे तो दिस विल बी 2 point, it comes around, and one more term is also you have to remember in this question, the number of alpha particle per minute, number of alpha particle per minute है। तो ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई बाई टी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था। अब अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल है 2He4 2 प्लस। तो एक अल्फा पार्टिकल को ट्रांसफर होने में चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 2e। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? दिस विल बी 2e। तो आप यहाँ पे एक टर्म और लिखें, Ne की जगह 2Ne लिखें, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाला टर्म आपका इसमें सब में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 एक बार आप लिखें, तो दिस विल बी 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 3 5 15, 5.3 into 10 to the power minus 17 एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है क्या? ओके, फिर अभी नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपके पास में? इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, तो एक आपके पास ये इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि यू हैव टू गिवन ए डिस्चार्ज ट्यूब, दिस विल बी द डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में आपका दिस विल बी कैथोड एंड एनोड, है ना? ये कैथोड एनोड है। सो डिस्चार्ज ट्यूब में जो टोटल करंट है, टोटल करंट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्लस न्यूनाइन करंट, दिस विल बी न्यूनाइन करंट Ne प्लस। ओके, ये टोटल करंट होगा, क्योंकि इन डिस्चार्ज ट्यूब कंडक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव आइंस। सो व्हाट इज करंट? करंट इज I is equal to, I is what? Ne by T, Q by T, Q by T means Ne by T. This will be the number of electrons and number of positive charge ions, so n dash E by T, ये given है आपको। अभी क्वेश्चन क्या है? इन ए डिस्चार्ज ट्यूब 10 to the power 2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन मूव एनोड टू कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और ये भी आपको क्या गिवन है? एनी प्लस आइन पर सेकेंड। ठीक है, so you have to given that in this question, so I is equal to what? N by T, and N by T is what? 2 into 10 to the power 18 N by T, और N dash by T is what? N dash by T is, it is 3 into 10 to the power 18। अब आप देख रहे हैं इसमें से ये हमने वैल्यूज लिख ली। आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई जो है वो दोनों टर्म में कॉमन है, तो ई को आपने कॉमन लिया, एंड दिस विल बी 2 into 10 to the power 18
और +3 into 10 to the power 18, so it comes 5 into 10 to the power 18. And what is E? E is the charge of electron, and charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. This will be 1.6 into 10 to the power minus 19. अब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सॉरी, सिंप्लीफाई करने पर आपका 10 टू दी पावर -1 ये टर्म बच जाएगा. तो दिस विल बी 16 5 80. ठीक है, 80 एंड एक के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे इंटू 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे आप, -1. 10 टू दी पावर दिस कम्स अराउंड 10 टू दी पावर -1. तो आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.0 था, तो दिस विल बी 8/10, एंड ऑन डिवाइडिंग वी गेट 0.8 एम्पियर इज द करेंट. क्लियर है क्या? ओके, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखें, लास्ट क्वेश्चन इज इन हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. So this will be the nucleus and an electron revolving around the nucleus. This is the nucleus, an electron revolving around circular orbit around the nucleus. Okay. So what will be the current produced by moving electron? So I equal to, we know that, Q by T. This will be the current. And charge of electron is what? Charge of electron is E. So we write it is E by T. This will be the charge of electron. बट इन दिस केस हमको टाइम तो पता नहीं है, तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए भी नोट दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन में स्पीड भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है. सो v इक्वल टू आर ओमेगा आप अप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू आर, और व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. 2 पाई बाय टी. So here we write it is t is equal to 2 pi r divided by v. This will be the value of time. तो आप टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करें करंट की इक्वेशन में. I इक्वल टू e बाय टी. टी मतलब t is 2 pi r by v. So this will be 2 pi r upon v. तो फाइनली आपने करंट यहाँ से कैलकुलेट किया. I is equal to e v डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ओके, ये आपने करंट को कैलकुलेट किया. क्या? ईवी अपॉन 2 पाई आर. आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. ठीक है, क्या है आपका टर्म, क्या है? ईवी अपॉन 2 पाई और आर. इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लें इस वाले टर्म को. अभी आप इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे सारे टर्म में, सो आई इज इक्वल टू व्हाट? आई इज इक्वल टू व्हाट इज ई? इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb, multiplied by speed. Speed is what? 2.2 into 10 to the power 6. This will be the speed of electron. And now you will get uh, 2, or what is the value of pi? Pi is 22/7. So this will be 22, और 7 को थर्ड रेशियो में है तो ऊपर लिखा है into 7. And what will be the radius? Radius is 5 into 10 to the power -11. This will be the radius, 5 into 10 to the power -11. अब जब आप इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो -11 से आपने इसको -19 को कैंसिल किया, सो दिस विल बी -8. एंड -8 को इस +6 से कैंसिल किया, सो दिस विल बी -2. क्लियर है? ओके, अभी आपने क्या किया फिर नेक्स्ट टर्म में, ये डेसिमल हटाया तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा आपको. And finally we get the answer on solving the term. So this will be I is equal to, क्या है आपके पास में, and 2 divided by 1.6, so it will be, we get 0.8. We get 0.8 into 22 into 22 multiplied by 10 to the power -2. Okay, divided by 22 into 5 into 10. So this will be 22 into 5 into 10. ओके, सो आपने क्या किया, ये 22 से ये 22 को कैंसिल आउट कर दिया, एंड इट कम्स अराउंड आई इज इक्वल टू, एंड इट विल बी आई इज इक्वल टू व्हाट?
it will be 0.8 upon 5, 0.8 upon 5 into 10 to the power minus 3. ओके, अब आप इसका डिवाइड करेंगे, सो इट कम्स अराउंड आई इज इक्वल टू 1 मिनट 1.6 माइनस 19 2.2 10 टू दी पावर प्लस 6 इंटू 7/2 और 5. ओके, तो ये आपने सॉल्व आउट किया, तो दिस विल बी कम्स अराउंड -8 से इसको तो 10 टू दी पावर -2. फिर आपने क्या किया है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 0.8 आया आपका, और 0.8 आया तो 22 10 टू दी पावर -2, सॉरी, इंटू 7 भी करने का है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके, तो फाइनल आंसर इज 5.6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3. तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट इज 1.12 and 10 to the power -3 ampere into 10 to the power -3 ampere, or it comes around, the answer is 1.12 milli ampere. क्लियर है? तो इतना हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.